Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hopefully you are fit and fine. Today is our lecture number 4 from the chapter Coordinate Geometry. Class 9th, subject Mathematics. Topic is question number 2. We have to solve question number 2 from exercise 5.1 from the older version of our textbook and exercise 4.1 from the new version of the textbook. Okay, let's read out question number 2. Street plan. We have to make a street plan. After reading this question, after reading this data, after reading this information, we have to make a street plan. Street plan is actually a map. Street plan एक मैप होता है किसी टाउन का या किसी सिटी का, जिसमें हम पोजीशन दिखाते हैं. किसकी पोजीशन दिखाते हैं? स्ट्रीट्स, गली कोचे जो है उनकी जो पोजीशन हम दिखाते हैं, तो उनका जो मैप बनता है उन स्ट्रीट्स का, तो उसको हम स्ट्रीट प्लान कहेंगे. स्ट्रीट प्लान होता है एक मैप होता है किसी टाउन का या किसी सिटी का, जिसमें हम पोजीशन दिखाते हैं स्ट्रीट्स की. सो स्ट्रीट प्लान it's a map. It's a map of a city or a town showing the positions of streets, showing the position of streets. So we have to make a street plan. Let's read out the question. A city has two main roads. A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. ये कह रहा है कि एक सिटी है, इसके दो मेन रोड्स है. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फिगर एक बनाई है, अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, दो रोड्स है. एक रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और दूसरा रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है. तो ये दोनों रोड्स आपस में मीट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एंड जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये है सिटी का सेंटर, तो हम यहाँ पे सी लिख सकते हैं. सो दिस पॉइंट, दिस इज द सेंटर ऑफ द सिटी. There are two main roads that are intersecting, that are crossing each other. One of the road is north-south direction and the second main road is in the direction of east-west. So these two roads are intersecting or crossing each other at the center of the city. So point C is the center of the city. Now we have all the other streets. Now these were the main roads in north-south direction and another main road was in east-west direction. And besides these two main roads there are streets. कुछ गली कोचे भी हैं, और कोचे ऐसे हैं, गलियां ऐसी हैं कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो मेन रोड है उसके पैरेलल है. स्ट्रीट्स इसके पैरेलल है, जो गली कोचे हैं वो इसके पैरेलल है, पैरेलल टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो इसी तरीके से और भी स्ट्रीट्स हैं जो ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में है. स्ट्रीट्स कितनी स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे लिखा गया है. ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल to these roads. All the other streets of the city run parallel to these roads. तो जो भी बाकी स्ट्रीट्स हैं वो पैरेलल है, या तो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन पे पैरेलल है
या फिर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की के साथ पैरेलल है, यानी यहाँ 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 या ऊपर। तो कितनी स्ट्रीट्स हैं? हाउ मेनी स्ट्रीट्स आर रनिंग पैरेलल टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन? कितनी पैरेलल स्ट्रीट्स हैं? यस, देयर आर अबाउट 5 streets, 5 streets in each direction. तो क्या है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 streets है और ईस्ट वेस्ट जो मेन रोड है इसके पैरेलल भी 5 streets है। ठीक, तो so we have 5 streets that are parallel to north-south direction, and we also have 5 streets running parallel to east-west direction. और ये भी कहा गया है कि ये जो स्ट्रीट्स है इनमें आपस में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो है 200 मीटर। 200 मीटर की गैप है। All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. जितनी भी स्ट्रीट्स है 5 यहाँ पे पैरेलल है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के साथ और 5 स्ट्रीट्स पैरेलल है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के साथ। तो हर एक स्ट्रीट में जो गैप है वो है 200 मीटर की गैप है। एक स्ट्रीट और दूसरी स्ट्रीट में गैप है 200 मीटर्स। तो हम इसको कैसे यहाँ पे इस मैप को कैसे बनाएंगे? इनमें तो गैप 200 मीटर्स है, तो हमारी जो जगह है यहाँ पे वो तो 200 मीटर्स है ही नहीं, तो हम इन स्ट्रीट्स की गैप कैसे 200 मीटर्स रखेंगे? यहाँ पे हमें स्केल इस्तेमाल करनी है। कौन सी स्केल? यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। क्योंकि जो स्ट्रीट्स के दरमियान जो गैप है दैट्स 200 मीटर, तो हर 200 मीटर हम बराबर लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गैप रखेंगे 1 सेंटीमीटर, तो वो हमें बराबर लेना है इक्वल टू 200 मीटर। वो हमें कंसिडर करना है कि वो जो 1 सेंटीमीटर है दैट्स एक्चुअली इक्वल टू 200 मीटर्स। तो अब हमें क्या करना है? Draw a model of the city on your notebook. So we have to make a street plan, we have to make a model of this city, we have to make the street plan, that is we have to show the position of the streets that are running parallel to east-west direction and north-south direction. First we will take the north-south direction and mark 5 streets parallel to north-south direction. Okay, for that you have to wait. Okay, stay online. Okay, I have marked the 5 streets. This is street number 1. This is street number 1. This is street number 2. This is street number 3. Then we have the main road. After that we have the 4th street. And then we have the 5th street. So these are the 5 streets. This is street 1, street 2, street 3. Then we have the main road. Then we have the center of the city. And we have then 4th street. And then we have 5th street. All these 5 streets are parallel to the main road, that is north-south direction. Okay, let's mark here N. This is the main road, north-south direction. Okay,
Now let's name them. This is street 1. This is street 1. This will be street 2. This will be street 3. And this is the main road that is running from north-south direction. This is the main road. Then we have the street 4 or 4th street, street 4. Then we have the 5th street, or we can say street 5. So we have 5 streets that are parallel to the main road that are running from north-south direction. Okay. What distance is between these streets? Between one street and the second street, there is a distance of 200 meters. But we have to use the scale as 1 centimeter equal to 200 meters. ये जो distance इनकी gap जो है, हाँ हमने यहाँ पे स्केल इस्तेमाल की है 1 सेंटीमीटर, मगर एक्चुअली ये 1 सेंटीमीटर असल में गैप जो है गैप है ये 200 meters की. So the distance between the two gaps has been marked as 200 meters, but on this notebook we have used a scale. That's 1 centimeter gap is equal to 200 meters. So these were the 5 streets that are parallel to the main road running in north-south direction. Similarly, we can put the mark 5 more streets that are running parallel to the main road that is running east-west direction. जो हमारी ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन जो मेन रोड है, हम अब इसके 5 स्ट्रीट्स बनाएंगे जो कि इसके साथ पैरेलल होंगे. तो चलिए हम 5 स्ट्रीट्स यहाँ पे डालते हैं. तो एक चीज़ करते हैं, 3 हम ऊपर डालेंगे और 2 हम नीचे डालेंगे. तो हमने यहाँ पे और 5 स्ट्रीट्स बनाई जो कि पैरेलल है. जो यहाँ पे मेन रोड है, ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में जो मेन रोड है उसके साथ हमने पैरेलल स्ट्रीट्स बनाई. कितनी? 5. 3 हमने नीचे लगाई और 2 हमने यहाँ पे ऊपर लगाई मेन रोड के. ठीक, तो ये हमारी रहेगी, दिस will be our street number 1. This will be our street number 1, running parallel to east-west direction main road. So this will be our street number 1st. Street 1st. Yes, this was also street 1st, but that is running parallel to the north-south main road. Now here, this street is street number 1, but it is running parallel to east-west main road or east-west direction. Parallel. This street is parallel to the east-west main road or east-west direction. Similarly, we have street 2. Then we have the main road. Then we have street number 3. Then we have street number 4. Then we have street number 5. So if we have 5 streets running parallel to east-west main road. Similarly, we have 5 streets
running parallel to the north-south main road. We have center of the city as well. So this was our street plan. We have got so many points here. This point, so many points are there, so many points of intersection are there, and all these points of intersection are known as cross streets. Here is one cross street, 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 one cross street. So we have so many. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 are 36 cross streets are there. We have 36 cross streets. Cross street means where the two streets are intersecting each other. Two streets are intersecting each other at this point, so this is known as cross street. Similarly, we have 36 cross streets in this street plan. Okay, I think this is enough for today. In next lecture, that will be our lecture number 5, we will solve the remaining part of this question, which is starting from here. So hope you understand the solution of this question. We had to make a street plan, that's a map of a city or a town showing the position of the streets. Here is the street plan showing the position and position of the streets. So this completes our solution of half of question number 2. Hope we will meet again in the next lecture, part number 5 on the YouTube, that will bring the solution of the remaining part of the question. Okay, thank you very much.